Okay, good morning, students. So this is the lecture number 8, and in this lecture we are going to discuss Polygon Law of Forces. So this is also the part of the fundamental law of mechanics. So first law, parallelogram law we have discussed, and second is triangle law of forces, and third is polygon law of forces. So triangle and parallelogram law are applicable for find out the resultant of two forces, but this law is used to find out the resultant of more than two forces. So let's go. So according to this, the magnitude and direction of various. So there is term is various. The magnitude and direction of various forces. The magnitude and direction of various forces are taken as side of polygon. Are taken as side of polygon in same order. First we have to take the all the forces in the polygon at sides of in same order. हमको polygon बनाना पड़ेगा और उसका सारे forces को हमको same order में लेना होगा. Then the direction and magnitude of the resultant force will be given by the side which close the polygon. Means जो उसका resultant और direction होगा वो क्या होगा? That close the polygon. जो उस पॉलीगन को लास्ट में क्लोज करेगा वो उसका रिजल्टेंट होगा और उससे हम उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, बट इन अपोजिट ऑर्डर. ऑल द फोर्सेज इफ यू मेक द पॉलीगन, ऑल द फोर्सेज आर इन सेम साइक्लिक ऑर्डर एंड बट द रिजल्टेंट इज द क्लोजिंग साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर इन दिस सिस्टम देर आर दीज फोर्सेज आर गिवन. F1 इज दिस इन टेंशन, F2 ये टेंशन में है, F1 F4 टेंशन में है, F3 अंदर जा रहा है. अंदर जाने को हम कंप्रेस बोल सकते हैं, है ना. ये ध्यान रखना, कंप्रेशन फोर्स हो गया. सो सिस्टम में कई सारे फोर्सेज आर गिवन. तो ये बहुत सारे फोर्सेज गिवन है हमको. सो तो द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट वी हैव टू मेक द पॉलीगन. सो वी विल टेक दिस F1 फोर्स, दिस F1 लाइक दिस. दिस इज द F1, this is the F1, and we will shift this force F2 parallel to like this according to principle of transmissibility. इस फोर्स को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, है ना. वी हैव टू शिफ्ट इट फ्रॉम हियर. वी आर नॉट चेंज द लाइन ऑफ एक्शन. हम लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं. दिस इज द F2. वी हैव शिफ्ट दिस फोर्स F3 लाइक दिस. सो दिस इज द as it is we can shift it to F3. This is the F3. the F4 we can shift. इसको पीछे ले जाएं वैसे के वैसे, बैकवर्ड डायरेक्शन. we will shift it backward direction. This is the F4. so we have make a polygon. This is simple polygon. So according to this law, what is the resultant? The closing side of a polygon. The closing side of a polygon, but in opposite direction. We can take this or this opposite direction. देखो, this is a cyclic order, है ना. This is a cyclic order in anti-clockwise. So the resultant is in clockwise. So this is the resultant. This is the resultant R. Okay, this is the resultant R. So we have to find the value of R and the direction of R. So कैसे करेंगे? So we make a different triangles. So first we make this triangle. This is we make this triangle. So this is cyclic order like this, and according to triangle law, F1 one force is given, second force is given in cyclic order, and the resultant is closing side of triangle. So we'll take this is R1. So from triangle law, from R1 is, what is R1? R1 is F1 plus F2. From triangle law we have solved, है ना. we will solve this by triangle law. So यहाँ से हम R1 निकाल लेंगे, है ना, from vector addition. Then
again this is also triangle, this is second triangle, this is resultant R2, फर्स्ट फोर्स इज इन दिस, सेकंड फोर्स इज F3, तो दो फोर्स गिवन तो थर्ड क्या होगा इसका रिजल्टेंट R2 इन क्लोजिंग डायरेक्शन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? R2 is R1 plus F3. So this is the triangle number 1, this is the triangle number 2, this is the triangle number 3. So in triangle number 3, the first force is R2 in anti-clockwise, second force is F4, and the resultant is R. So what is the value of R? So ultimately we have find the value of R. R निकाल लेंगे हम. R is equal to R2 plus F4. So ultimately we have applied the triangle law in फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल. तो पहले हमको पॉलीगन बनाना है, उसके बाद फोर्सेस को शिफ्ट करके ऐसे करके हमको पॉलीगन बनाना है एक ही साइक्लिक ऑर्डर में. फोर्स को हमको इस तरह शिफ्ट करना है. वी हैव टू शिफ्ट द फोर्सेस like this. We make a simple polygon law in same cyclic order, and the resultant is closing direction, and make a different triangles 1 2 3 4 5 6 n number of triangles. So this law is used for find out the resultant and the direction of resultant more than two forces. Okay students, thank you very much, and in next lecture we will discuss about the topic analytical method to find out the resultant. Okay, thank you.